StudyIQ में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स पार्ट 27 में हम फिलर एक्सप्रेशंस को कवर करेंगे। कई बार देखा जाता है हम लोग जब इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम लगातार बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। दैट इज व्हेन दीज फिलर एक्सप्रेशंस कम इन हैंडी। आप उस टाइम पे आज की इस वीडियो के माध्यम से लर्न किए जाने वाले फिलर एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, फिलर एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, ये क्या चीज है। कई बार अगर आपको बोलते बोलते कोई पॉज लेना होता है, कहीं जगह किसी जगह पे ठहरना होता है, या आप सर्टेन नहीं होते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप, यू डोंट नो, यू नॉट वेरी सर्टेन, यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू विश टू कन्वे, या फिर आप कभी कभी हिचकिचा जाते हैं, यू आर हेजिटेंट अबाउट समथिंग, सिंपली यू वांट टू बाय सम टाइम, आप थोड़ा वक्त चाहते हैं ताकि यू कैन गैदर योर थॉट्स अगेन एंड कंटिन्यू स्पीकिंग। In that particular scenario, these filler expressions are extremely helpful. Now, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन filler expressions का प्रयोग आप professional scenario में कम से कम रखिएगा। Professional scenarios में rather इन filler expressions का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए ideally. Well, let's just look at some fillers and let's just try to practice them together over here. स्टार्ट करते हुए एक फिलर जो कि बहुत सिंपल है और आपको अवॉइड करना चाहिए, बट स्टिल अगर आप एक तरीके से इसे यूज करेंगे देन यू कैन कंटिन्यू स्पीकिंग विदाउट अ पॉज एंड यू कैन इवन यूज दिस फिलर, दैट इज I was thinking about going to Shirdi this weekend. I was thinking or planning to pay a visit to Shirdi this weekend. एक और बहुत ही कॉमन फिलर एक्सप्रेशन दैट इज लाइक एक ऐसा फिलर एक्सप्रेशन है जो आप बहुत कॉमनली देखेंगे। लाइक और एक्चुअली, ये दो ऐसे फिलर एक्सप्रेशंस हैं जो काफ़ी लोग दे आर गिल्टी ऑफ यूजिंग इट। आई इंक्लूडेड, मी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेम। लेकिन आपको याद रखना है दैट दिस इज ओवरकिल्ड। ओवरकिल्ड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाता है, बट यू शुड यूज इट स्पार्सली एंड जुडिशियसली। I was like planning to pay a visit to Shirdi this weekend. So आप like का कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा ये filler expressions, they are not having any inherent meaning. इनका कोई अर्थ नहीं होता है। They are just there so that you can continue speaking with the same momentum. You can keep the momentum going. एक और फिलर वर्ड जो कि काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है, that is you know. You know what I mean? You know what I'm saying? ये काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है। राधा अगर आप इंग्लिश पे टीवी शोज को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ सेलिब्रिटीज इस क्लच वर्ड का प्रयोग करते हैं। I was thinking about going to Shirdi this weekend. Do you know what I mean? Do you know what I mean? You know, I was planning to take a trip to Dubai this summer. You know? Then थोड़ा सा pause. So you know or do you know what I mean? ये दो भी ऐसे फिलर एक्सप्रेशंस हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। Another common filler expression is sort of, kind of. Sort of, kind of. Sort of and kind of भी ऐसे important filler expressions हैं जिनका प्रयोग करके आप बिना रुके बातचीत कर सकते हैं। I was sort of planning to take a trip to Shirdi this weekend only if my grandfather feels better. I was sort of planning. I was kind of keen to go to Shirdi this weekend as it's been long. I was kind of planning to go to Shirdi this weekend as it's been long. So sort of and kind of. Well, जी हाँ, well भी एक filler expression है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। Well, I was planning to leave for Shirdi this weekend. Well, I was planning to leave for Shirdi this weekend. I was planning to pay a visit to Shirdi this weekend. I was planning to leave for Shirdi this weekend. Another common used filler expression is so. ये भी काफ़ी बार overcooked हो जाता है, overused हो जाता है। So, are you done with the work that was assigned to you? So, how was the movie that you'd gone to watch this afternoon? So भी एक important filler expression है that helps you to speak
by making sure that you're maintaining the momentum. So जो gap filler है, so gap fillers help you to continue speaking fluently without interruptions. So that is also another way to use this filler expression. Or something. ये भी एक filler expression है. I was planning to visit Amsterdam in winters to visit my uncle this year. Or something. I was planning to visit Amsterdam in winters this year. Or something. So ये भी एक तरह का filler expression है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं. Another very similar filler is tell me something. Praneeth, tell me something. Are you getting hitched this year? Oh, excuse me, can you please tell me something? When will this shop open? Can you tell me something or tell me something? So as we can see over here, Praneeth, tell me something. Are you getting hitched this year? So tell me something. Don't tell me. Don't tell me. I already know about their plans. Don't tell me. I already know about their plans. Whoa. ये surprise भी express करता है as well as it's a filler. Whoa. Stop. I need to think about that. Whoa. That sounds pretty decent a plan. Whoa, that's incredible. Whatever you've thought about. So वो का भी प्रयोग आप as filler कर सकते हैं. Well, we've already looked at, well, let's see how the future unfolds. You see. ये भी एक filler expression है. I wanted to go, you see, but I'm not too well today. I wanted to go, you see, but I'm not too well today. You see, I had to take a trip, but I couldn't because I was not feeling well. So यहाँ पर you see is also a filler expression. By the way, again a very commonly used filler expression. By the way, what's the plan for today? By the way, let's stop talking about this issue. By the way, is the work done? So by the way is also a filler expression जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं to speak non-stop. To be honest enough, I'm not the correct person to help you. To be honest enough, I have no idea where she's gone. To be honest enough, in my opinion, the temperature is pretty decent. To be honest or to be honest enough. Exactly भी एक filler expression है. Exactly, I was also planning to pay a visit to Shirdi this weekend. Let's go together. Exactly भी एक filler expression बन जाता है. No way, you must be kidding me that it's an off tomorrow. No way, we can't go there. No way, you must be kidding me that there's an off tomorrow or there's an off tomorrow. Another filler expression is you know what I'm trying to say. You know what I'm trying to say? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने देखा था you know what I'm trying to say. Do you know what I'm trying to say? Basically भी एक बहुत ही commonly used filler expression है. Basically, I'm not too happy with the plans they have made. Basically, I wanted to get rid of this pain immediately. Basically, I'm not ready right now for this proposal. Basically, certainly will go together this morning. Certainly. So basically, certainly, actually, ये तीन भी ऐसे common fillers हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं to speak non-stop. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और आप comment section में mention कर सकते हैं कि किस तरह से which of these filler expressions would you be using to speak non-stop in English. आप उसका एक example एक या दो sentences में comment section में लिख भी सकते हैं.